Oh, Canada, our home and native come tonight and celebrate the momentous victory of Prime Minister Narendra Modi. I've had the pleasure of visiting India 14 times and 8 times to Gujarat. And I first met Narendra Modi in 2007 at a Vibrant Gujarat conference, and I see a few people here who were at that conference. And I remember immediately recognizing this was an individual who had tremendous potential, someone that was going to change his state and his country for the better. And he really has. His leadership in Gujarat is recognized around the world. The way he was able to bring wealth and success and business into Gujarat is one of the many reasons why he was elected Prime Minister in such a stunning and huge manner. I had the chance to speak to Mr. Modi prior to his election, actually the night before, and on every occasion that I've spoken to Narendra, I've always been impressed by how focused he is on the task at hand, how he recognizes the importance of the immense position he is in. But the one thing that I'd like to share with you tonight is we talk a lot about how this is a wonderful day for India, how we're going to have a government that is clean, how we have a leader who's going to reinvigorate India's economy. But I'd like to say to you today that it's also a wonderful day for Canada. And it's a wonderful day for Canada because I feel we have a very special relationship with Narendra Modi. And he mentioned that to me the night before the election a few weeks ago. He said, "I'll never forget that Canada was there during his difficult days." And if you recall, there was people that made allegations that were found to be incorrect, they were found to be wrong, and he was clear. But Canada always stood by his side. In 2009, Canada had one of the largest delegations at his investment conference, Vibrant Gujarat, thanks to the leadership of Mukund Purohit. And in 2011, Canada was one of only 2 countries in the world, Canada and Japan, that co-sponsored Narendra Modi's Vibrant Gujarat that year. I had the pleasure of speaking at that conference, and so did our High Commissioner, Stuart Beck. And in 2013, there's a few more countries that came. And now, every country in the world wishes they were in Vibrant Gujarat in 2007, 2009, and 2011. I understand the American ambassador asked our High Commissioner, Stuart Beck, how do you get to have such a close relationship with the new Prime Minister? Well, it's great that we have a Prime Minister in India who remembers who his friends were, and Canada was a good friend to Narendra Modi, and I am really excited for what that means for Canada-India relations in the years ahead. I spoke to Prime Minister Harper, our Prime Minister, a few days after the election, and he told me that he spoke to Narendra Modi on the Sunday after the election. It was a very positive conversation. He said that they immediately clicked. There was a sense that they had the same priorities, the same goals, and we're very much hoping to have Prime Minister Modi visit Canada in the near future. I would suggest that Prime Minister Modi is expected to visit the UN for the very important meetings in September, and I would not be surprised if Canada is on that trip as part of his itinerary. And I think that would be a lovely sign of friendship, and one of his very first overseas trips is to Canada. And I know our Prime Minister extended that invitation and has said
that he's very much looking forward to working closely and step by step with Prime Minister Modi. So I don't want to take much of your time with a long speech. I just wanted to say that we are, in the Government of Canada, very excited about what this means for India's economic progress, what this means for our relationship with India, and I can't think of a better time where we've been more optimistic about the potential for both countries. I plan to go back in October and in January when they have another edition of Vibrant Gujarat, and actually for this time, Vibrant India. I know our ministers are planning visits. Chris Alexander will be visiting in the summer. Our immigration minister, Minister Baird, foreign affairs minister, is going to visit in June, and Kelly Leach, our Minister of Human Resources, is visiting in October. So we have a very robust agenda to work with Prime Minister Modi, and I'm sure he tremendously appreciates the support he's had by the members in this room. Obviously, your support of the BJP is one of the reasons that he was elected in such a stunning, dramatic fashion. So thank you for supporting a great man. Thank you for supporting someone I think will be a great leader for India. Have a wonderful evening here tonight. It's also special that it's here on Bridal Road at this very temple, because we had a rally wishing him the best of luck about a month before the election, and the videos and speeches from that rally were shared with Chief Minister that time, Chief Minister Modi. So I think it's auspicious and perfect timing that in the very same facility that we wished him best of luck, that we are now celebrating his victory. Have a wonderful evening. Thank you, Patrick Ram. Ladies and gentlemen, now I would like to share the presence of very important people here. We have Mr. Amar. Thank you very much. Namaste, namaskar, assalamu alaikum, sasrikal, welcome. It is a great pleasure to join with many friends here on behalf of the Government of Canada to join with you in celebrating the election and appointment of Narendra Modi ji as Prime Minister of the world's largest democracy, India. I don't think Canadians understand how significant this is, because Mr. Modi just won the largest election in the history of humanity. More people voted, and more people voted for him and his candidates than in any election ever held before, because of the enormity of India. And let me just say, we all celebrate as Canadians. We celebrate the success of Indian democracy as an example to the rest of the world. Billions of people still live in tyranny. Billions of people live in countries where they do not get to choose their own government. Billions of people live in places without respect for their human dignity, their basic rights, including their religious freedom. Think of the people of China. And yet, and some of those people in those countries say that in a big, complex, diverse country, you cannot have a democracy because there's too many divisions. And yet we know that India is big, the second most populated country in the world. It is enormously complex. It is infinitely diverse, hundreds of languages, many religions, every major world religion present in India, a hugely complex, diverse, pluralistic society, and yet,
Indians choose who will govern them. Indians choose how they will govern themselves. Indians choose how to make their own laws, and they do so, yes, sometimes there's problems, sometimes there's friction, even from time to time violence, but effectively, over 1 billion Indians went and participated in this election, and they did so peacefully and orderly, and elected a strong government with a clear mandate to lead India to the future. And so I would like, on behalf of the Government of Canada, to say congratulations to all of the diverse peoples of India for showing the rest of the world what democracy is all about. And I, in particular, would like to congratulate the new Prime Minister, Narendra Modi, with whom I had an opportunity to spend a great deal of time last year in Gujarat, when I visited Ahmedabad. Now, friends, you know that a few years ago, Western governments decided to virtually put Mr. Modi and the government of Gujarat on a blacklist. No visas, no engagement, no relations. Even though he and his government were leading the strongest economy in the subcontinent, even though they were effectively combating corruption, even though they had broad popular support from different communities, there was a paternalistic attitude taken by many of the Western developed countries. And I am proud of the fact that Canada was the first G7 country to move beyond that period of frozen relations. And we made a bold choice to engage in with the government and people of Gujarat, and specifically with the government of then Chief Minister Narendra Modi. When we decided in 2008, that's right. When we decided in 2008 that Canada would open a trade promotion office in Ahmedabad, we have done so much to develop our relationship with all regions of India. We've opened trade promotion offices and consulates and expanded our diplomatic presence all across India, of course maintaining our large presence in New Delhi, being the only country in the world, I believe, to have a diplomatic office with our consulate in Punjab, in Chandigarh, which I visited several times, expanding our office in Mumbai, opening a new Canadian consulate in Bangalore, opening a new consulate in Kolkata, opening a new office, including a visa office in Hyderabad, and all across the country, including the new trade, and of course in Chennai, and opening this trade promotion office in Ahmedabad was part of that strategy. We were not going to follow the other countries in continuing to blacklist the people of Gujarat and the opportunities that that trade provides to increase prosperity in Canada. That's why I went to Ahmedabad last year on behalf of the Government of Canada, our Prime Minister Stephen Harper, and I spent an hour privately meeting with then Chief Minister Modi. I spent 2 hours sitting next to him on the stage at the closure of his 2013 Vibrant Gujarat conference in front of a crowd of tens of thousands of people from all around the world who were there to come to see the economic miracle that is Gujarat. For those people who say that because of corruption or other problems that India cannot have a vibrant economy, Gujarat is the answer. Gujarat is the rebuttal. And so that is why I went there. Of course, going back to visit all of my friends in Punjab for the third time, and in other regions. I was also in Chennai, in Cochin, Mumbai, Delhi, and Goa. But here's the point. I invited Chief Minister Modi to come and visit Canada. I, as Minister of Immigration, said that we would like you to visit Canada. We would like Canada to be the first G7 country that you meet, that you visit,
as Chief Minister, and I can assure you, Mr. Modi, you will have no trouble getting a visa to come to Canada. And he smiled, he said he knew that he appreciated that we were there. And I must tell you, friends, that our decision to engage Gujarat, our decision to open an office there, our decision to treat Chief Minister Modi with the respect that his office deserved, was not universally accepted. We had people in the, I'll call it the foreign policy establishment in Ottawa, who criticized us. We had people like Harun Siddiqui in the Toronto Star attacking us. I see that you and I have the same view about Mr. Siddiqui. Yes. And we were standing up against that criticism. And we said, no, that we must engage. We believe in democratic values. And I believe that our decision to engage has been vindicated by the Indian people in these recent elections. All across the country, south to north, east to west, Sikh, Muslim, and Hindu. And people say that his opponents said that Mr. Modi's election would be divisive. But as I understand it, Mr. Modi won the majority of electoral districts in the Lok Sabha with the largest Muslim populations in India. This is a uniter, not a divider. And I recognize the presence here of so many Sikh Canadians who reflect the fact that Mr. Modi had strong support from the Sikh community in Punjab and elsewhere. We want to encourage him and the BJP government and its allies to be true to those commitments about uniting, about community cohesion, about moving all Indians of all backgrounds and religions and faiths in the same direction of prosperity and democracy. And so I want to tell you in closing that when I completed my meeting with Mr. Modi in Ahmedabad, he said to me, Mr. Kenny, I want you to know that I will remember that Canada was here first. I will remember that Canada has been Gujarat's friend. I will remember this. And so, with the blocks that we have built to massively improve the Canada-India relationship, with the nuclear cooperation agreement that put behind us 40 years of frozen relations, with the foreign investment protection and promotion agreement that we hope he will shortly finalize. And by the way, one of the reasons that I am enthusiastic about his election is because, I'll be honest with you, I can say this now, for the last 2 or 3 or 4 years, we were frustrated that nothing was getting done in Delhi. I don't know why nothing was getting done for us, for Canada. I think the Indian people were frustrated. We certainly were. That our free trade negotiations were frozen. We were frustrated that the Lok Sabha was not ratifying our foreign investment protection and promotion agreement. We were frustrated on so many issues of bilateral Canadian-Indian interest. And so now that we have a government of action, we expect to see those things move forward as we continue to build this amazing relationship between Canada, one of the world's greatest democracies, and India, the world's largest democracy. So to those who are here representing BJP and the affiliated parties, the non-resident and the NRI wing, and Vipin Sharma, President, welcome. To all of you we say thank you, congratulations, may God bless Canada, and may God bless the great democracy of India, and may there be many blessings on Prime Minister Modi as he leads India from strength to strength. Merci beaucoup. Thank you. ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਪੀਆ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ।
President, BJP NRI, Mr. Vipin Chandra Paul Sharma, on stage and say a few words. Mr. Vipin Chandra Paul Sharma. अभी खाना मिलने वाला है, थोड़ी जोर से तालियां बजा देंगे प्लीज. अभी बस 5 मिनट में मिलने वाला है खाना. थैंक यू. पहले थोड़ा सा माहौल गर्म कर ले. मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, आप उसका जवाब देंगे. मैं कहूंगा श्रीमान नरेंद्र मोदी, आपने कहना है जिंदाबाद. भारतीय जनता पार्टी, आपने कहना है श्रीमान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. श्रीमान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद. भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद. कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल. कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल. मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे. आज के इस प्रोग्राम में पहुंचे, अभी अभी यहां से गए हैं कैनी साहब, पैट्रिक ब्राउन, श्रोमणी अकाली दल के जो हमारे मेहमान हैं डाबिया साहब भी पहुंचे हैं, और बहुत सी महान शख्सियतें यहां पर आई. मैं उनका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. और जो आज का प्रोग्राम युवा मोर्चा ने पूरा जोर लगाकर सारा इकट्ठ किया, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं. बिल्लाजी नवजीत सिंह विर्क जो हमारे युवा मोर्चा के प्रधान हैं, उनको कनाडा का प्रधान बनाया गया है. मैं सबसे पहले आप सबको नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर बहुत बहुत बधाई. यहां पर जितने लोग बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने यहां बैठे बैठे जो इंडिया में इलेक्शन हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ढंग से वहां के इलेक्शन में मदद की है. कोई सोशल मीडिया के हिसाब से ले लें या टेलीफोन के जरिए ले लें. बहुत सारे लोगों ने जो काफी देर से हमारी सभी की मनोकामना थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने. आप सबका नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो आपने कार्य किया, जहां बैठे बैठे, आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं. यहां बैठे बैठे जो योगदान आपने दिया, मुझे सतीश शर्मा जी कल बात कर रहे थे कि हमारा जो यहां पर काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी तो इंडिया में है, हम कैसे मदद करते हैं, कैसे हमने जो इतना इंतजाम किया, वो कैसे हमारे काम करने से इंडिया में मदद होती है. वो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं. कहते हैं एक जंगल में आग लग गई, सभी पक्षी सभी जानवर उस आग को बुझाने के लिए लग गए. एक छोटी सी चिड़िया उस जंगल में आए और ऊपर से उड़ती हुई फिर वापस चली जाए, फिर आए फिर वापस चली जाए. तो दूसरे जानवरों ने कहा कि चिड़िया तू क्या करती है, तेरे पंख जल जाएंगे, तू मारी जाएगी, ऐसा क्यों कर रही है. तो उस चिड़िया ने बोला कि आप क्या कर रहे हो. उन्होंने कहा हम तो आग लगी हुई आग बुझा रहे हैं. तो वो चिड़िया बोली कि मैं भी जो साथ में पाउंड है उसमें से पानी लेकर अपनी चोंच में इस आग को बुझाने के लिए इसके ऊपर से पानी फेंक रही हूं. मैं भी कोशिश कर रही हूं कि ये आग बुझ जाए. सो उस चिड़िया ने जो कहा कि मैं भी ऐसे आग बुझाने में लगी हुई हूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि उस चिड़िया ने जो योगदान दिया उस आग को बुझाने के लिए, जो अपना योगदान पाया, उसने कहा जब कभी भी इतिहास रचा जाएगा, जब इस आग का जिक्र होगा
तो मेरा भी जिक्र होगा। जो आपने भी आग बुझाई है तो मैंने भी उसमें योगदान दिया। हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी सभी की दोहरी जिम्मेवारी बन जाती है। एक तो हम यहाँ पर आ गए, हमारे बच्चों का भविष्य कनाडा से जुड़ा हुआ है और हमें सिखाया भी गया है कि जहाँ का खाएं अन्न वहाँ का जाए मन, और हम इस कंट्री में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और उसके अलावा दूसरी जिम्मेवारी जो हमारी बनती है कि जहाँ से हम भारत से आए हैं वहाँ भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, और हमारी जो जड़ें हैं, हमारी रूट्स हैं जो वो इंडिया में है, इसलिए हमें वहाँ का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कौमें, जो समाज अपनी जड़ों को भूल जाता है वो समाज नष्ट हो जाया करता है। जैसे हम कहते हैं कि यूनानो, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो क्या बात है? वो वही बात है कि हम अपनी परंपराओं को नहीं भूले, हम अपनी संस्कृति को नहीं भूले, हम अपनी तहजीब को नहीं भूले। इसलिए यहां पर आकर हमें सभी को अपनी दोहरी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। आप सभी लोग अपना कितना कीमती समय छोड़कर यहां बैठे हैं, कितने हजारों लोग हैं जो भी घर में बैठे हैं, किसी को किसी बात की चिंता नहीं। बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार के अलावा और दूसरी बात नहीं सोचते। आप लोग हैं जो समाज के बारे में चिंता नहीं करता, वो एक एनिमल के समान होता है। जैसे हम कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, अगर हम उसमें से सोसाइटी को निकाल दें तो मैन इज अ एनिमल। जो लोग आप सब जहां आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। जो जीत इंडिया में हुई है, मुझे इस बात का यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इससे जो हमारे इंडिया और कनाडा के, इंडिया और अमेरिका के संबंध इस जीत के बाद और भी सुधरेंगे, जिसका हम सभी को लाभ होगा। हम वो लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। द वर्ल्ड इज अ होल फैमिली। अगर विश्व तरक्की करता है तो भारत भी तरक्की करे। हम वो लोग हैं जो सर्वत्र का भला मांगते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम ये नहीं कि हमने विश्व को फतेह करना है, विश्व को जीतना है। हम भी तरक्की करेंगे और दुनिया भी तरक्की करे, दुनिया के जो अलग अलग कंट्री हैं वो भी तरक्की करें। भारत दुनिया को कुछ देना चाहता है। कैसे देना चाहता है कि हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे पुरातन देश है। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, कभी विश्व गुरु का दर्जा रखने वाला भारत, हजारों साल का जो लिखित इतिहास है, भारत के पास 12,000 साल का लिखित इतिहास है। ये सबसे पुरातन देश है। हमने विश्व गुरु का दर्जा हजारों साल अपने पास रखा है। एटॉमिक की बात कर लें तो हमने कुरुक्षेत्र के मैदान में वो एटॉमिक जो आज हथियार बने, हमने वहां मिसाइल वगैरह बहुत सामने हमने देखी। शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की आज भी हम सभी लोग बात करते हैं। ऐसा समाज था कि सभी लोग
घरों में रात को सोते वक्त कोई ताला, कोई लॉक नहीं लगाता था। ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हमें सभी को बहुत आशा है। सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ये इलेक्शन जीता तो सारी दुनिया का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ था। एक भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। इतना बड़ा 125 करोड़ का जो मुल्क है, एक भी घटना नहीं हुई। वोट के द्वारा इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया। नहीं तो कितने देश ऐसे हैं जहां पर रोज बैलेट चलता है, रोज बंदूकें चलती हैं, सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा। दुनिया में हमारा नाम ऊंचा हो। ऐसी परिवर्तन की हवा चली। पीछे जब हम आज बात कर रहे हैं तो मोदी जी के प्रधानमंत्री के लक्ष्य में हमने जो आज का कार्यक्रम रखा है, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये देश की भलाई के लिए ये परिवर्तन भारत में बहुत ही जरूरी आवश्यक था। हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारी लीडरशिप पर वहां के लोगों ने भरोसा जताया। बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी के साथ, अपने सहयोगी दलों के ताकत के साथ पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी में बनी है। आपने सभी ने सुना होगा ओबामा साहब और मोदी जी की मीटिंग होने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, सुनने में छोटी लगती है, इसके दूरगामी नतीजे निकलने वाले हैं। भारत में वंशवाद का खात्मा हुआ है। आज पहली बार है कि जब भी कोई सरकार बनती थी तो जो सत्ता पक्ष था वो बिखरा हुआ रहता था। आज पहली बार है कि सत्ता पक्ष है जो बिखरा हुआ है, उनको इतनी कम सीटें जो मिली हैं वो ये भी नहीं सूझ पा रहा कि आगे क्या किया जाए। जो राजनीति पिछले 10 साल में इंडिया में जोड़ तोड़ की राजनीति चली, जो जुगाड़ की राजनीति करी, उसका खात्मा हो गया। नए युग की शुरुआत हुई है। जो आजादी के बाद जिन लोगों ने जन्म लिया उनके हाथ में सत्ता आई है। अब भाजपा सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हमने अब लोगों का दिल जीतना है, आगे बढ़ना है। दुनिया हमारी तरफ ताकत से देख रही है। 125 करोड़ लोगों को साथ लेके चलना है। इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पर देश को मजबूत बनाना है। हमने सभी ने देखा अभी जो मोदी जी ने फैसले लिए हैं, काले धन के बारे में हो, जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में हो, इंटरनल पॉलिसी के बारे में हो, वो बहुत ही लाजवाब है और आगे भविष्य के लिए हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा। मैं थोड़ा सा भाजपा के बारे में भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो भाजपा जो कनाडा का जो विंग है उसके द्वारा किया जा रहा है। एक ऐसा समय था जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी। जहां कहीं भी कैंडिडेट खड़े होते थे जमानतें जब्त हो रही थी। अब ये जो सरकार बनी है इसके पीछे 65 साल की तपस्या लगी हुई है। जो लोगों ने घर बार छोड़कर पार्टी के लिए कार्य किया, उसी के बलबूते आज ये सरकार बनी है। ये कोई अचानक नहीं हो गया, एक दिन में नहीं हो गया। इसके पीछे बहुत तपस्या जुड़ी हुई है। ये कोई साधारण जनादेश नहीं था। किसी को उम्मीद नहीं थी। मोदी जी कहते थे जहां भी जाते थे कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनके सारे हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे। वो सारी बातें सच्ची हुई। ये कोई चमत्कार नहीं था। पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया। ये पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। जैसे मोदी जी ने कहा
कि 5 पीढ़ी खप चुकी हैं इस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। और जैसे आप सभी ने जो पहला भाषण था मोदी जी का सुना कि मोदी आपको दिखता है इसलिए नहीं कि मोदी बहुत बड़ा है, मोदी आपको इसलिए दिखता है कि मोदी को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने कंधे पर उठा रखा। अब ज्यादा ऐसे तो पॉलिटिकल बातें हैं, जितनी मर्जी कर लें ये चलता ही रहेगा। आपको सभी को भूख लगी होगी और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जहां की कुछ जो समस्याएं हैं वो हम रल मिलकर दूर करना चाहते हैं। जैसे पंजाब की एक समस्या मेरे ध्यान में लाई गई कि एयर इंडिया का जो जहाज जहां से चलता है वो दिल्ली रुक जाता है, उसकी जो फ्लाइट का कनेक्शन है वो अमृतसर में होना चाहिए। हम जिन लोगों ने पहले इसके लिए कार्य किया है उससे बातचीत करके मैं यकीन दिलाता हूं कि ये कार्य भी करेंगे। और भी जितने आप लोगों के को कार्य होंगे जो साझे कार्य हैं, हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।